Hello students, welcome to the third session of digital marketing course with AI. So yesterday we had done the layers. What is a layer in Photoshop? And then we had done some more tools like selection tool, eyedropper tool, eraser tool, text tool. So all these various tools we had done, and thereafter we saw the concept of layers. So what is layer in Photoshop? What is the use of layer? How layer is created? All these things we covered yesterday. Now today we'll get a little more deeper into layers. So as I said yesterday, that in Photoshop, the most important aspect is layer. It is the most important thing in Photoshop. So if you are not able to use layers properly, you will not be able to do anything with Photoshop. So as I showed you yesterday, when you create a new file, a background layer is created by default in the layer box. So if the layer box is not visible, what you do, you go to Windows, window menu, and come down to layers. And the layer box will open. And when you create a new file, you'll find that one background layer is created by default. And that layer will be locked. And if a layer is locked, you will not be able to perform any action on the objects that is on the locked layer. Right? So that is what layer is all about. And this is the button to create a new layer. Now let us continue with this. Now let us draw some shapes. So when you want to draw some shapes, as I told you yesterday, that one layer should have only one object. If you have multiple objects on the same layer, you will not have absolute control over each and every object. So therefore, to have full control over each and every object, one object should be placed on one layer. So don't place multiple objects on a single layer. That is the basic thumb rule of layers. So what I do, and since the background layer is locked, I will not place anything on the background layer. It will remain blank like this. And I create a new layer. And then I choose my shape tool. We start with the rectangle tool. And choose the color. Suppose this is the foreground color. Now, if I draw something, so that is placed on this layer 1. This rounded rectangle object is placed on layer 1. And then we'll create another layer. We'll place another object. Suppose you want to place a circle. Now you can change the color again. So this is the color box.
In the color bar, change the color, select the shade of the color. Now this is the color code, and I say OK. So my foreground color will change, and I've already created a new layer, so I can safely draw now. So I draw a circle, and that is placed on the new layer, that is layer 2. So in this way, I'll create another layer, and then I'll place another object. Now suppose I want to place a triangle. So I take this color, and new layer is already created. So I draw my triangle. And since I've given the radius here as 20 pixel, so triangle is having round corners instead of straight corners. If I don't give any radius value here, if I make it 0, then I'll have straight corners for the triangle. So I place this triangle shape on this layer, layer 3. Then I create another layer. I now draw a polygon. Now polygon, as I said, polygon is any number of sides. Poly means any number. So suppose I want to draw a 6-sided image, a 6-sided shape. So I'll make it 6 here. In the number of side box, this is a side box. When I select the polygon tool, it will show the side box here, number of sides. I enter the number of sides. I'll change the color. Suppose I change the color and I draw. Right? Then I again create a new layer. I want to draw a line, vertical line or horizontal line. And when I take the line tool, it will ask for the weight. Weight, W-E-I-G-H-T, weight. Weight means the thickness of the line, how much thickness you want. So if I give 1 pixel thickness weight, then it will be hairline thickness. That is called a hairline thickness. And then you can increase the weight to give more thickness to the line. You have to apply more thickness to the line. Now suppose here I give 20 pixel. I change the color again. Suppose I change the color and I draw a line. Now I've already created the new layer. So I can now safely draw the line on the new layer. And after that, I'll now create a custom shape. So I select the custom shape tool from here, last one. Again, change the color. And from custom shape tool, I'll select a particular custom shape. Suppose I want to draw this sailboat, right? So I draw it. Just you drag the mouse, it will draw by itself. So this color is applying here, yellow color. So many shapes I've drawn. Now after the shape, suppose I want to write some text. So now I'll select the text tool. And I want to write a single line of text. So I will not create a text box now. I'll just click and type.
And if I create a text box, I want to create a paragraph, then I need a text box, I'll do that. But for the time being, I'll just click anywhere on the page and start typing, because I don't need a paragraph now. I need only a single line of text. Suppose I click here, and this is the default lorem ipsum. This is the default text that is appearing here. So I remove this default text, and this is my font size for the moment. So I can increase my font size. I can increase the font type. Suppose I want this font type, bold, italic, underline, bold, italic, and all these I can select from here. None, sharp, strong, smooth, I can select from here. And then I type. What you can do, just select this, make it 48 if you want to. Change the font type, make it sharp, make it bold. You can set the alignment here, and the text color will be this. Now suppose I want to type hello world. If I want to change the color, now as you can see, when you are typing for the first time, the foreground color and the text color is matching. So this is the text color where you have all the parameters of text of font. And this is the foreground color, that is the color of the shape. Now this is matching. When you type for the first time, this foreground color and the text color will match, will be the same. But later on you can change it. So what I can do now, I can select the text and I can change the color of the text if I want to. So I change the color here. Now, have you noticed one thing? When I'm using the text tool, did I manually create a layer? No. So therefore, when you are using the text tool, the layer will get created automatically. You don't need to create a new layer manually. New layer has to be created manually only in case of shape tool. But for text tool, the layer will get created automatically. Now watch again. Now suppose I want to type another text. So when moment I click on this, see another layer is created here. And suppose I write something here. Welcome to my page. Right? Now see this, a new layer is created. So when you are using the text tool, don't create a new layer manually, because the moment you start typing the text, a layer will get created automatically. So don't create a new layer manually. Okay? For text tool. So that is the use of text tool. Okay. Now we have created so many layers now. There are so many layers we have right now. So here we have this 5, other than the background layer, we have 5 shape layers and 2 text layers. This T icon that you see, that means the text layer. Now let us see more about layers.
On the left hand side of the layer box, you can see the eye icon, open eye. So if the eye is open like this, that means the layer is showing what is on this layer. For example, on layer 1, this is the layer 1, it is showing. So if I click on this icon, eye icon, so it will hide. Again, when I click on this, it will again show. Again click, it will hide. Again click, it will show. So show and hide. So when I come to the next layer, the layer 2, so I click, hide and show, hide and show. Same thing with layer 3, hide and show. Layer 4, hide and show. Layer 5, hide and show. Then text layer, hide and show. Then the other text layer, hide and show. So this eye icon is about hiding and showing the content of that layer. So in this way, you can control whether you want to hide it or you want to show it. Now, what is the purpose of doing that? Hide and show. The purpose of hide and show is, suppose you have created too many layers on the same page, on a particular page, right? So you have created a number of layers and your page is overcrowded. Now, at a time, you will not be required to all work on all the layers simultaneously. So what you do, you need to work on a few selected layers. So for the moment, what you can do, you can hide the other layers to free up the page. So if you hide the layers that you will not be working upon at the moment, you can hide those pages. वो पेज को हाइड कर सकते हो. तो ये जो आइकन है हाइड एंड शो का है. हाइड लेयर एंड शो लेयर. हाइड लेयर करने से लेयर का कंटेंट जो है वो हाइड हो जाएगा और क्लिक करने से फिर आंख जैसा आई दिखेगा फिर शो हो जाएगा. इसका यूज क्या है कि पेज को फ्री अप करने के लिए. नाउ अभी जो लेयर के ऊपर आपको काम नहीं करना है अभी, व्हाट यू कैन डू, उस लेयर को आप हाइड कर सकते हो और जिस लेयर में आपको काम करना है उसको शो करके रखो. इससे क्या होगा, आपका पेज जो है वो फ्री अप हो जाएगा, कंजेस्टेड नहीं रहेगा पेज. तो ये है आपका हाइड एंड शो का काम. ओके, फिर क्या है, अभी राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 और टेक्स्ट लेयर का टेक्स्ट जो है वो दिखा रहा है यहाँ पे. सो ऑन द लेयर नेम you see the different names applied by default. You see layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5 and the text layer, this layer. Now you can change. आप चेंज कर सकते हो लेयर नेम को. लेयर नेम को अगर चेंज करना है तो क्या करोगे, what you do if you want to change the text layer name, if you want to change the layer name, just double click on this. Just double click करो और यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो. यू कैन इंसर्ट योर द लेयर नेम, दैट पर्टिकुलर लेयर नेम. अभी इस लेयर में क्या है, इस लेयर में है मेरा राउंडेड रेक्टेंगल. तो राउंडेड रेक्टेंगल इज देयर ऑन दिस पर्टिकुलर लेयर, सो यू नेम इट राउंडेड रेक्टेंगल. एक एप्रोप्रिएट नाम डाल दो, पुट सम एप्रोप्रिएट नेम सो दैट आइडेंटिफाई कर सको इजीली. फिर इस लेयर में आ जाओ. नाउ कम टू द नेक्स्ट लेयर. इस on this layer you have the circle. So here I can say blue circle.
ब्लू सर्कल नाम डाल दिया। कुछ भी अप्रोप्रिएट नेम जो है, अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है वो डालो। देन इसमें यू कैन हैव ट्राइंगल, पिंक ट्राइंगल। ओके, फिर इसमें पॉलीगन, तो ऑन दिस लेयर नेम इट एज पॉलीगन। ऑन दिस लेयर, अभी देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। लेयर 5 में जो है मैं ये कस्टम शिप टूल है, जो बोट है, बोट का इमेज डाला मैंने, फोटो डाला इसमें, और उसका साथ में एक ही लेयर में मैंने लाइन भी इंसर्ट कर दिया, तो दोनों एक साथ हो गया। सो दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट आई डू, तो क्या करना है मुझे, आई डिलीट दिस लेयर, आई डिलीट दिस लेयर, और डिलीट करने के लिए कौन सा बटन है, ये जो लेयर है, लेयर क्रिएट करने के लिए, so this for creating the layer and this for deleting the layer, as you can see here. So click on this. So when you attempt to delete, जब delete करने जाओगे, you'll be required to confirm कि delete करना है मुझे। तो delete the layer, layer 5 पूछ रहा है, तो say yes, तो delete हो गया। ओके, सो इन दिस वे delete it। और फिर क्या करना है, फिर मुझे और एक न्यू लेयर क्रिएट करना है, और यहाँ पे और एक जो कस्टम शिप टूल है, यहाँ पे कस्टम शिप टूल बोट शिप है, बोट शिप को डालेंगे, और then we'll create another new layer, and this, then we'll put the line tool. Use the line tool because line is also part of the shape tool. So line tool is also a shape tool. So therefore you have to create the new layer. तो जैसे मैंने पहले बताया, मैंने अगर शेप टूल आप यूज कर रहे हो, उसके लिए आपको लेयर क्रिएट करना है मैन्युअली, और लाइन टूल भी एक शेप टूल है। तो इसलिए लाइन टूल अप्लाई करने के लिए पहले एक लेयर बना लो, फिर डालो। So I create the new layer here, I change the color, and I draw the line। अभी अलग अलग हो गया सब, ये शेप अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग है, all these are different on different layers। Okay, these are on different layers। So hide and show मैंने दिखाया ऑलरेडी, I've already shown you hide and show layers। And then what we did, these layers are not required, so delete these layers now। These are blank layers, and all the other layers I've named it। Now this layer, which is this layer, this is the boat layer, so I can rename this, so boat। और this ये जो layer है, layer 9 line layer है, line, so rename this। so इसी तरीके से you can rename all the layers। so by default it will be layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, and so on and so forth। but if you want to rename the layer according to your convenience, you can rename them like I did here। Correct? Okay, now next thing we'll see how to lock and unlock layer। अभी कैसे लॉक करना है लेयर को और कैसे अनलॉक करना है वो दिखाएंगे अभी।
So as I said, background layer is always locked. So don't unlock it, let it remain locked, and we are not putting anything on the background layer. So background layer हमेशा lock रहने दो, और background layer में कुछ object नहीं मत डालो क्योंकि वो lock हो जाएगा. बट ये जो लेयर्स आपने बनाया है, ये सब लेयर भी आप लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस लेयर, ये सर्कल लेयर. ये सर्कल लेयर है. नो इसको लॉक करना है तो क्या करना है, लॉक आइकॉन जो है यहाँ पे क्लिक करो. इट इज लॉक्ड. अभी सर्कल लेयर भी लॉक्ड हो गया. अभी सर्कल लेयर लॉक्ड हो गया, इसका मतलब क्या है, सर्कल के ऊपर अब कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे. सो आफ्टर लॉकिंग द सर्कल लेयर, you will not be able to perform any action on the locked layer. इसको रिसाइज नहीं कर पाओगे, इसको मूव नहीं कर पाओगे, रोटेट नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसको. लेट अस ट्राई. यहाँ पे मूव टूल लिया, you have taken the move tool, see it is not moving. If you want to resize, nothing. If you want to rotate, nothing is happening. Why? Because the layer is locked. So if you lock a particular layer, you will not be able to perform any action on that particular layer. Okay? So what you have to do, you have to unlock it. तो अगर वो लेयर के ऊपर कुछ एक्शन मुझे परफॉर्म करना है, उसको अगर रोटेट करना है, कि उसको रिसाइज करना है, उसको मूव करना है, तो हैव टू अनलॉक द लेयर. तो लेयर को अनलॉक करने पड़ेगा. सो हाउ डू अनलॉक? इस लेयर को सिलेक्ट करो and then click on this lock icon again. Unlock हो गया. So this is lock. क्लिक, एक बार क्लिक किया लॉक हो गया, और एक बार क्लिक किया अनलॉक हो गया. अभी ये ट्रायंगल लेयर को अगर लॉक अनलॉक करना है, यहाँ पे लॉक आइकन को क्लिक करो, लॉक हो गया, और एक बार क्लिक करो, अनलॉक हो गया. So once you click, it is locked, that layer is locked, and then again you click again and the layer is unlocked. So in this way you can lock and unlock a layer. So by locking and unlocking, you can do some action if you unlock, and if you lock it, you will not be able to perform any action on that layer. So that is the locking and unlocking. After that, what do you have? After that, we have the linking. Now suppose I want to link these layers. ये जो लेयर है, ये लेयर, इस लेयर और इस लेयर, ये तीनों लेयर को मुझे लिंक करना है. Like a, imagine like a ट्रेन. ट्रेन में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स रहता है, और सब कंपार्टमेंट एक कंपार्टमेंट से दूसरा कंपार्टमेंट लिंक किया जाता है, राइट? सो in the similar way, you can link the different layers. So these are all different layers, अलग-अलग compartments, separate compartments, but you can link them together like a train. Correct? So कैसे लिंक करोगे? लिंक करने के पहले क्या करना है? What do you need to do before you link? You have to select the layers. Suppose अब डिसाइड करो कौन कौन सा लेयर को लिंक करना है. First you decide which are the layers you want to link. I want to link this layer and this layer and this layer. Now you see, when I click on a particular layer, this layer is selected. But when I click on the different layer, the selection comes on this. This layer is not selected now. When I click on this, again this layer is getting selected, this layer is not. But if I want to select multiple layers, तो क्या करना है? तो ए लेयर को अगर सिलेक्ट करोगे, फिर इस लेयर को सिलेक्ट किया तो इस सिलेक्शन का निकल गया, फिर इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्शन यहाँ से निकल गया. लेकिन अगर सब लेयर को एक साथ सिलेक्ट करना है, then what do you do? So first select one layer, then hold down the shift button, then click another layer, and then click another layer.
तो देखो यहाँ पे 3 लेयर सिलेक्ट हो गया. These are the selected layers. So how do I do it? I'll repeat this. I select one layer. After selecting one layer, एक layer select करने के बाद shift button on the keyboard hold down करो, इसको प्रेस करके रखो और छोड़ो मत इसको. Don't release the shift button. Without releasing the shift button, you then click on the other object. So these 2 objects now selected, and then you click the other object which you want to select. So select this. Now all these selected layers will be highlighted, as you can see here. After that, what do you do? After that, you take the cursor on any of the selected layers, right click and say link layers. So here it is, link layers. So link it. So when you link it, what will happen? The link, the chain icon will come like this. That means these layers are now linked. तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो इसको और यहाँ पे लिंक लेयर्स आएगा. लिंक लेयर्स में क्लिक करने के बाद ये लेयर सब लिंक हो जाएगा. और लिंक हो गया कैसे पता चलेगा? बाय द आइकॉन. चेन का जो आइकॉन है इससे पता चलेगा कि आपका लेयर्स लिंक हो गया. लिंक हो जाने के बाद यू कैन मूव इट टुगेदर लाइक ए ट्रेन. The different compartments, they move together because these compartments are linked. So similarly here also the same thing. तो ट्रेन में जैसे कंपार्टमेंट लिंक रहता है और ट्रेन के साथ एक साथ चलता है, तो इस यहाँ से भी यहाँ पे भी सिमिलर फैशन में आपका लेयर लिंक्ड हो गया और एक साथ वो मूव करेगा, रिसाइज करेगा, जो भी हो. रिसाइज करना है कि मूव करना है कि रोटेट करना है, जो भी करना है आप करो तो एक साथ होगा. जबकि लेयर सब अलग अलग है, बट क्योंकि ये लेयर सब लिंक्ड हो गया तो एक साथ होगा सब, जो भी होगा. करेक्ट. So although the layers are separate here, but since the layers are linked, so it will perform all the action together because the layers are linked. Now if I want to unlink the layers, what I do? So I again right click on any of the linked layers, right click करो and say unlink layer. unlink layer, यहाँ पे unlink किया. unlink करने के बाद फिर सब लेयर अलग अलग हो जाएगा. अच्छा, ये जो लेयर सभी भी लिंक्ड है, सो अभी ठीक हो गया. सो यहाँ पे इसको भी ये करो, राइट क्लिक करो, अनलिंक लेयर. सो सब लेयर सभी अनलिंक हो गया. सो लिंक लेयर एंड अनलिंक लेयर. लिंक लेयर करने से लेयर सब लिंक हो जाएगा और अनलिंक करने से लेयर सब अनलिंक हो जाएगा, फिर अलग अलग सेपरेट लेयर हो जाएगा. So when you link the layers, it will be linked together, and when you unlink the layer, all the layers will be unlinked, and again the layers will be separate. So this is your linking and unlinking layer. Now what you can do? You can change the position of the layer. लेयर का पोजीशन चेंज, ऑर्डर चेंज कर सकते हो. जैसे कि एकदम नीचे है आपका ब्लू सर्कल लेयर, ये वाला, तो अभी इसको आप इस ऑर्डर में प्लेस करोगे, इट विल प्लेस लाइक दिस. सो व्हेन यू प्लेस इट इन ऑर्डर as per the order on the layer box, now right at the bottom you have the blue layer, then you have the pink layer which is this, then you have the polygon layer which is this, then you have the rounded rectangle layer at the right, at the very bottom. So this is this, it goes at the very bottom here. Then you have the text layer, this hello world, and below that you have above that we have the welcome to my page text layer, right?
and then you have the boat layer, and at the very top you have the line layer. So as of now the layer order is in this fashion. तो अभी जैसे टूल बॉक्स में दिखा जा रहा है, तो लेयर्स है, लेयर सब इस तरीके से इस ऑर्डर में स्टैक किया है। एकदम नीचे है आपका राउंडेड रेक्टेंगल वाला, उसको ब्लू रेक्टेंगल, ब्लू सर्कल है, फिर पिंक ट्रायंगल है, फिर एक्वा पॉलीगन है, फिर टेक्स्ट लेयर जो है, फिर बोट लेयर है, और एकदम ऊपर है लाइन लेयर। अभी क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। नाउ यू कैन चेंज द ऑर्डर of the layers. How? Now suppose you want the rounded rectangle layer at the very top. So what I'll do, I'll select this rounded rectangle layer, hold the mouse button, and when you hold the mouse button, you see the hand is fist is closed like this, and then you drag it and leave it. Now you see the rounded rectangle layer comes at the very top. तो आपको क्या करना है, फिर रिपीट कर रहा है। राउंडेड रेक्टेंगल लेयर एकदम नीचे है, एकदम बॉटम में है। इसको अगर ऊपर लाना है तो क्या करना है, राउंडेड रेक्टेंगल लेयर को सिलेक्ट करो, फिर माउस को होल्ड डाउन करो। माउस को होल्ड डाउन करने से ऐसा क्लोज फिस्ट जैसा आइकॉन दिख रहा है। अभी माउस बटन नहीं छोड़ना है इसको, फिर ऐसे ड्रैग करो, ड्रैग करके एकदम ऊपर जाके इसको छोड़ दो। सो राउंडेड रेक्टेंगल लेयर एकदम ऊपर आ जाएगा। अभी पॉलीगन लेयर जो है, बोट लेयर जो है, उसको मुझे पॉलीगन और पिंक ट्रायंगल का बीच में रखना है। सपोज ये जो बोट लेयर that you have, you want to place it in between the polygon layer and the pink triangle layer. Right now it is here, the boat layer is this, but I want to place it in between the polygon layer and the pink triangle layer. Correct? तो ये दोनों के बीच में मुझे बोट लेयर को डालना है। तो क्या करना है, मुझे सेम प्रोसेस, ये लेयर को पहले बोट लेयर को सिलेक्ट करो, फिर माउस बटन इसको होल्ड करो, डोंट रिलीज द माउस बटन, इसे ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ो, तो दोनों के बीच आ जाएगा वो। अभी पॉलीगन एंड पिंक लेयर के बीच बोट लेयर आ गया। सो इन दिस वे यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द लेयर इन द लेयर बॉक्स एंड ऑन द पेज। तो इस तरीके से आप लेयर्स का पोजीशन चेंज कर सकते हो, उस लेयर का ऑर्डर चेंज कर सकते हो इन द लेयर बॉक्स, और पेज में वो दिखेगा। करेक्ट? फिर और क्या क्या कर सकते हैं? नाउ लेट्स सी, नाउ अगेन लेट अस सेपरेट दिस लेयर्स। सब लेयर्स को सब फिर सेपरेट कर लिया मैंने। अभी क्या करना है, सपोज लेयर को मुझे मर्ज करना है, मर्जिंग लेयर्स। मर्ज मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्जिंग? मर्ज, MERGE, मर्ज, मर्जिंग लेयर्स। लेयर को मर्ज करने का मीनिंग ये है कि जो जो लेयर आपने सिलेक्ट किया मर्ज करने के लिए, वो सब फ्लैटन होके एक पर्टिकुलर लेयर में आ जाएगा। So when you merge, so you select the layers which you want to merge, and when you merge the selected layers, those selected layers will collapse, will flatten into one particular layer. तो लेयर मर्ज करने से क्या होगा,
अलग अलग लेयर्स जो है वो फ्लैटन होके एक सिंगल लेयर में आ जाएगा. So when you merge the layers, what will happen? All the selected layers that you want to merge will flatten into one single layer. That is the meaning of merging. So what is the difference between merging and linking? Linking और merging layer में difference क्या है? Difference यही है कि in linking, when you link the layers are separate. वो merge नहीं हो रहा है, वो separate ही रहेगा, but layers linked हो जाएगा. तो लेयर बॉक्स में देखोगे वो लेयर सब अलग अलग है, बट इट विल लिंक टुगेदर. और मर्जिंग करने से क्या होगा? मर्जिंग करने से द लेयर्स दैट यू वांट टू मर्ज विल फ्लैटन इनटू वन सिंगल लेयर. सब लेयर फ्लैटन होकर एक सिंगल लेयर में आ जाएगा. सो व्हेन यू लिंक, all the layers that you want to link will show separate on the layer box, but the layers will be linked. But when you flatten it, when you merge it, all the layers that you have selected to merge will flatten into one single layer. So that is the difference. Now let's see. Suppose I want to merge this rounded rectangle layer and polygon layer and the boat layer. These three layers I want to merge. So what I'll do, I have to select, just like linking, you have to select those layers. So hold on the shift button on your keyboard. So I select the rounded rectangle first, then hold on the shift button on the keyboard and then click on polygon. Sorry, rounded rectangle, not shift, hold on the control button, then click on polygon and then click on the boat, because these three layers I want to merge. So first select these three layers like this. So how do you select? Select the first layer that you want to merge, then hold the control button, click on the layer that you want to merge with this, suppose polygon, and then click another layer that you want to merge with this, suppose boat. So these three layers are now highlighted, selected. Next, what you do, you go to any of the selected layers, right click on this and say merge layers. Merge layers. So when you say merge layers, what will happen? All the layers that you have selected for merging will flatten into one single layer. See, layers are not separated now, right now. All the layers that you want to merge, they're not separate anymore. They're merged into one single layer. They flattened into one single layer. So आपको क्या करना है? लेयर सिलेक्ट करने के बाद एक सिलेक्टेड लेयर में राइट क्लिक करो और ये जो राइट क्लिक करने के बाद जो बॉक्स आ रहे हैं यहाँ पे मर्ज लेयर्स जो है, मर्ज लेयर्स में क्लिक करो. करने से सब लेयर्स मर्ज हो जाएगा एक साथ. सब जितने भी जो लेयर्स को मर्ज करना था वो सब लेयर फ्लैटन होके एक सिंगल लेयर में आ जाएगा. So that is the meaning of merging layer. Okay. Okay. Now there is another thing. Now let's see one more thing here. Rounded rectangle, polygon और boat. इतने तीन लेयर को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक किया और मर्ज लेयर्स के साथ और दो चीज है यहाँ पे, मर्ज विजिबल एंड फ्लैटन इमेज. मर्ज विजिबल में क्या होगा? आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है लेयर्स. अब अगर मर्ज विजिबल लेयर्स करना चाहते हो, आपको लेयर्स सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं. कौन कौन से लेयर आपको मर्ज करना है वो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको क्या करना है, जो लेयर को आपको मर्ज करना है उस लेयर को शो करो और बाद बाकी लेयर को हाइड करके रखो. सपोज आई वांट टू, सो व्हाट यू, व्हेन यू वांट टू मर्ज विजिबल option, then you don't need to select any layer. What you need to do is to hide those layers which you don't want to merge and show the layers which you want to merge. Okay, suppose I want to merge this layer, rounded rectangle and polygon and boat. So I'll keep this show
this layer is showing, this layer is showing, and this layer is showing. All the other layers I'll hide. I'll hide all the other layers. Right. So only these 3 layers are showing. Now when what I do now, when I right click on this and I click on merge visible, what will happen? It will merge only the visible layers. Visible means the layers that are showing. तो जो लेयर शो कर रहा है वही लेयर विजिबल है. तो अगर मुझे लेयर विजिबल लेयर ही मर्ज करना है तो मुझे वो जो लेयर मुझे मर्ज करना है उसको विजिबल रखो. राइट क्लिक करके यहाँ पे मर्ज विजिबल क्लिक करो. सो इट विल मर्ज all the visible layers on the into one single layer, and thereafter merge करने के बाद ये सब लेयर जो हाइड करके रखा था उसको फिर शो कर दो इसको. ठीक है. तो फिर अलग अलग हो जाएगा. ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये जो लेयर्स है ये अभी मर्ज हो गया एक साथ. दैट इज जो मर्ज विजिबल. मर्ज विजिबल के लिए क्या करना है? जो लेयर को मुझे मर्ज करना है वो लेयर को विजिबल रखो और बाकी लेयर को हाइड करके रखो. और फिर राइट क्लिक करके मर्ज विजिबल क्लिक करो तो जो लेयर शो कर रहा है वो मर्ज हो जाएगा. राइट. और फिर हो जाने के बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन अगेन शो द लेयर्स व्हिच आर नॉट मर्ज. ठीक है. सो दैट इज द प्रोसेस. ओके. और क्या है? और एक चीज है यहाँ पे जो है कि फ्लैटन इमेज. दैट इज द लास्ट थिंग. सब इमेज को फ्लैटन कर दो. राइट. तो जितना भी लेयर्स है सबको एक साथ फ्लैटन कर दो. मुझे कुछ चूज नहीं करना है कि कौन से लेयर को फ्लैट करना है, कौन से लेयर को मर्ज करना है, लिंक करना है. मुझे कुछ चूज नहीं करना है. जितने भी लेयर्स है सबको एक साथ फ्लैट कर दो. दैट इज कॉल्ड फ्लैटनिंग लेयर. तो फ्लैटनिंग लेयर में क्या होगा? मुझे कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. कौन सा लेयर मुझे मर्ज करना है, कौन सा लेयर मुझे मर्ज नहीं करना है, ये सब सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो क्या होगा? अगर फ्लैटन लेयर कर देंगे तो जितने भी लेयर्स है सब एक साथ फ्लैट हो जाएगा into one single layer. So let's see that. Now select this and I say flatten image. देखो सब एक साथ बैकग्राउंड लेयर के ऊपर फ्लैटन हो गया. अभी अलग अलग लेयर्स नहीं है अभी. तो क्या हुआ? सब बैकग्राउंड लेयर के ऊपर एक साथ फ्लैटन हो गया. और फ्लैटन हो जाने के बाद क्या हो रहा है? जो अलग अलग लेयर था अभी अलग अलग लेयर नहीं रहा. So that is the flatten image. Okay. So this way. Now what is the use of flattening image? Flattening image is, suppose you are designing something. After you have completed the design with different layers. So while you design, you have to maintain different layers. And after you complete the design, what do you need to do? You need to flatten it into one single layer and then send for, say, whatever use you want to use that particular image. If you want to use for digital media or print media, use it. But Photoshop file cannot be used directly for digital purpose or for print purpose. You have to flatten it and then use it. So while designing, you need to have the Photoshop file with different layers. After the design is done, is completed, you flatten the image into one single layer and then transfer that image for print or for digital purpose, whatever it is. So flatten करने का मतलब क्या है? फ्लैटन करने के इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अगर आप फोटोशॉप फाइल ओपन करके रखे हो जहां पे अलग अलग लेयर्स है तो फोटोशॉप फाइल को आप डायरेक्टली प्रिंट या डिजिटल पर्पज में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें अलग अलग लेयर्स है. तो जब तक आप डिजाइन कर रहे हो उसको अलग अलग लेयर मेंटेन करो. एक बार डिजाइन कंप्लीट हो गया तो उसको फ्लैटन कर दो. फ्लैटन करके फिर उसको आप यूज कर सकते हो फॉर डिजिटल पर्पस और प्रिंट पर्पस.
लेकिन जब तक डिजाइन कंप्लीट नहीं हो रहा है आप फोटोशॉप फॉर्मेट में हो, एंड फोटोशॉप फॉर्मेट इज द पीएचडी फॉर्मेट. पीएचडी, दैट्स द फोटोशॉप फाइल, एंड फोटोशॉप फाइल विल हैव लेयर्स. तो फोटोशॉप फाइल में क्या होगा, लेयर्स रहता है. और एक बार डिजाइन कंप्लीट हो गया, आपको फोटोशॉप फॉर्मेट नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसको फ्लैटन करके एक सिंगल लेयर में सबको लेके you send it for print or send for detail purpose, whatever purpose you want to use that image, you can use it. So that is the meaning of flattening the image. At the end of, at the very end, when the image is, when the design is complete, fully complete, only then you do this. But till the design is not complete, keep it in PSD file, because PSD file is very important, because here you have the layers. If you want to make change in future to the design, so if it is flattened, you will not be able to do any change in the design. But if you have the Photoshop file with different layers, you can make the change in the design in future. So अब फ्यूचर में अगर डिजाइन में कुछ चेंजेस मुझे करना है, तो अगर सब लेयर में फ्लैटन कर दिया तो मैं चेंजेस नहीं कर पाएंगे फिर. उसके लिए मुझे फोटोशॉप फाइल चाहिए जहाँ पे अलग अलग लेयर्स हो, राइट. तो जब तक अब अगर फ्यूचर में आपको अगर कुछ चेंजेस करना है डिजाइन में, तो फोटोशॉप फाइल हमेशा रखो, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस करना है आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि उसमें अलग अलग लेयर्स रहेगा. और फिर काम हो जाने के बाद उसको फ्लैटन कर दो, और फिर डिजिटल पर्पस और प्रिंट पर्पस उसको यूज कर दो. लेकिन फोटोशॉप फाइल आपको मेंटेन करना है. यू हैव टू मेंटेन द फोटोशॉप फाइल, and the Photoshop file is the PSD file. Now see, this is the file. If I save the file, अगर फाइल को मैंने सेव किया, I do save, it will be saved as a PSD file. As you can see here, it will be saved as a PSD file. Why? Because you have different layers. So once the PSD file is created, it will be there, and later on, if you want to make some changes in the design, you can make the changes. So अगर फ्यूचर में कुछ डिजाइन में चेंज करना है और आपके पास PSD फाइल है, आप इजिली डिजाइन में चेंज कर सकोगे, क्योंकि उसमें अलग अलग लेयर्स है. और एक बार डिजाइन फिर कंप्लीट हो गया, फिर उसको फ्लैटन कर दो. फ्लैटन करके आप डिटेल पर्पस या प्रिंट पर्पस यूज कर सकते हो. सो देयर इज दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लैटनिंग द लेयर. ओके. और लेयर में अभी और भी कुछ है, बहुत सारी कुछ है इसमें लेयर में. सो देयर आर मोर थिंग्स ऑन द लेयर. सो वी विल डू दैट टुमारो, and we'll continue with layers tomorrow again. And so as of today, let us end the session here, and tomorrow we'll continue the layers again. Thank you for attending the session. Bye.